Today is 27th October 2025, and today we are starting material chapter for Edexcel Physics IAL. And we have discussed before recording two basic definitions. Number one, density. Density is mass per unit volume, and density shows how the particles are compact in a body. The compactness of material, the compactness of particles in a body is called density. In iron, the compactness is very high. So the density of iron is very high as compared to wood. Then we studied pressure. Pressure is force per unit area, and the pressure of liquid is rho GH. Rho GH. This rho is density of liquid, h is the depth, and depth is always measured from the surface of the liquid. Then I explain what is upthrust, but do not try to memorize this derivation. Only you should know upthrust formula, and the origin of upthrust is when an object is immersed into the liquid, then obviously pressure on the top surface is always less and the pressure at the bottom surface is always high. So there is a pressure difference, and this pressure difference causes a force that is called upthrust, and upthrust always act in upward direction. And the equation of upthrust is density of liquid into gravity of earth into the volume of object, and the volume of object which is immersed into the liquid. Sometime object is partially immersed and sometime the object is totally immersed. In both cases we do not use the whole volume, we use the volume of object which is immersed into the liquid. जितना ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ होगा हम उसका वॉल्यूम यूज करेंगे, हम पूरा वॉल्यूम यूज नहीं करते. So this is the equation of upthrust. And now I am going to explain a famous law that is called Archimedes principle. What is Archimedes principle? So the principle is, consider this is a block and I am measuring the weight of this block by using spring balance. Consider this is spring balance and this block is hung vertically with this spring balance and the block is in air. Consider the weight of the block in air. Consider it is 100 Newton. Consider it is 100 Newton. And right now the block is hanging into air. But if I immersed this block into a liquid, consider this beaker is filled with water and the block is totally immersed into the water. So when I measure weight of the object in water, then I measured, consider the weight is now 70 Newton. 70 Newton. It means the weight of object decreased. And it is the statement of Archimedes, when an object immersed into a liquid, when an object, you should note down because this definition will be used in this chapter, when an object immersed into a liquid, then it loses weight. And it is clear the weight of the object in air is 100 Newton, but when the block is immersed into water, its weight is less. It means when the object immersed into a liquid, it loses weight. And the loss of weight, and the loss of weight equals to, I am saying two sentences. Number one, equals to upthrust,
Consider the original weight is 100, then obviously the upthrust acting upward, and this upthrust will be 30 Newton. So when I ask you calculate net force, so net force 100 Newton weight acting downward, 30 Newton upthrust acting upward, 100 Newton weight acting downward, 30 Newton upthrust acting upward. So the remaining weight is 70 Newton. So this 70 Newton shows that the weight of the object decreased. The object has lost weight. And how much loss? The lost equal to upthrust. Because upthrust acting upward, and this upthrust decreases the weight of the block. So the weight of the object is less now. So I can write the object has lost its weight. How much? Equal to upthrust. Or this sentence is difficult, which I am going to write now. This sentence is difficult to explain. Or the weight of liquid, the weight of liquid displaced by the object. Obviously, you know, when an object immersed into a liquid, then obviously object displaced liquid. When object immersed into a liquid, then obviously the object displays liquid. And if you measure the weight of liquid that is displaced by the object, then the weight of liquid equals to upthrust. The weight of liquid displaced by object, when the object immersed into the liquid, then obviously it displaced liquid. And I should change the size of the beaker, because when the block immersed into the liquid, obviously this volume of liquid rises up due to the object immersed into the liquid, then water level rises. And when the liquid level rises, then you can measure how much liquid rises. And if you weigh the size and weight of the liquid, then the loss of weight equals to the water displaced, weight of water displaced, जितना पानी ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया, जितना पानी ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस किए हुए पानी का, डिस्प्लेस किए हुए पानी का अगर आप वेट कर लो ना, वो हमेशा अपथ्रस्ट के बराबर होगा. एंड दिस स्टेटमेंट व्हेन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, देन आई कैन एक्सप्लेन. अभी मैं जितना बोलूं आप मेरी बात नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर आपको ये स्टेटमेंट खुद समझा देगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू अ लिक्विड इट लूजेस वेट, एंड दिस लॉस ऑफ वेट equals to the weight of liquid displaced by object. ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है उसके वेट के इक्वल उसका अपना वेट लॉस हो जाता है. तो दिस स्टेटमेंट आई बिलीव कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. अलबत्ता ये वाली स्टेटमेंट तो आराम से समझ में आ जाती है. ठीक है जनाब. तो वी हैव कंप्लीटेड थ्री डेफिनेशंस: डेंसिटी, अपथ्रस्ट, आर्शिमीदेस, and now we are moving forward. Consider this is a block, and this block is immersed into water, and you can see the weight acting downward, upthrust acting upward, and obviously weight is greater than upthrust. That is why the object is moving downward. And when the block reaches to the base of this water reservoir, then obviously now it is in contact with the base. And you know, when an object is in contact with the base, then there is a contact force acting on the object, and this contact force is the normal reaction force. So this is the third force which is acting now on the block.
weight acting already downward, upthrust acting upward. When the block is in contact with the base of the reservoir, water reservoir, then this reaction force or contact force is also acting in upward direction. So this is I have extracted from your book, Edexcel book. And now two more definitions. One more definition. What is the meaning of laminar flow? What is the definition of laminar flow? What is the definition of turbulent flow? So I have extracted another picture from your Edexcel book in which the water is flowing और बेटा द वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है किसी मेरे ख्याल में रिवर में। तो आप इस पार्ट को देखिए। तो इन दिस पार्ट वाटर इज फ्लोइंग साइलेंटली। ठीक है जनाब, पानी बहता हुआ आ रहा है बिल्कुल खामोशी से, स्ट्रीम लाइन फ्लो। बट एज इट इज फॉलिंग डाउन तो देयर इज टर्बुलेंस, और जैसी टर्बुलेंस होगी तो शोर भी होगा, और आप देखिएगा बबल्स भी बनेंगे, और पानी ऊपर नीचे उछल भी रहा होगा। इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इट इज अ पिक्चर ऑफ शोइंग लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बट व्हाट इज इट्स प्रॉपर डेफिनेशन? प्रॉपर डेफिनेशन मैंने इसमें कहीं लिखी नहीं है सर, ये डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लिक्विड और फ्लूइड मूव्स with uniform lines in which velocity is constant. When liquid is flowing with constant velocity, when liquid is flowing in a line, in a uniform line, it is called laminar flow or streamline flow. But if there is an obstacle in the flow of water, then the water begins to flow with turbulence. In turbulence flow, you can see the velocity of the fluid will change over time, and it is in an unpredictable manner. ठीक है जनाब, ये इसको और आसान करके समझा लूँ कि सम टाइम रोड पे जो अच्छे कंट्रीज होती हैं उनमें जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो गाड़ियों का या ट्रैफिक का जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन में चल रहा होता है। हर बंदा अपनी गाड़ी को एक ही लाइन में चला रहा होता है। इट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे कराची में आ जाएं तो जो बंदा गाड़ी चला रहा होगा बस बहुत जल्दी में होगा और वो बस उसने आगे निकल जाना है। ठीक है जनाब, तो जब ऐसा उल्टा सीधा ट्रैफिक चल रहा होगा तो इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है जनाब, तो जब पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड or particles of a gases are flowing in a line, in a line, in a uniform line with a uniform velocity, then it is called turbulent flow. And if there is an obstacle, consider a liquid is flowing smoothly or laminar flow, but consider in the path of this water flow, consider this is an obstacle. अगर ऑब्स्टिकल आ गया तो ऑब्वियसली ये पानी यहाँ से फ्लो करके आगे जाएगा, ये पानी यहाँ से आगे फ्लो करके जाएगा, और आप देखेंगे कि अराउंड द ऑब्स्टिकल देयर इज अ टर्बुलेंस, अराउंड द ऑब्स्टिकल देयर इज टर्बुलेंस, so this is called turbulence flow. So before obstacle it is laminar flow, and around the obstacle it is turbulent flow. ठीक है जनाब, लैमिनर फ्लो में स्पीड कांस्टेंट होती है, टर्बुलेंट फ्लो में स्पीड भी खराब हो जाती है। तो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट। एंड नाउ आई थिंक इट इज द फाइनल कॉन्सेप्ट, देन वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन। द फाइनल कॉन्सेप्ट, द फाइनल डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड देन वी आर स्टार्टिंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट हेडिंग इज स्टोक्स लॉ। The next heading is Stokes' law. Sir, what is Stokes' law? According to the Stokes' law, but before Stokes' law, you should know what is this symbol, because a symbol is going to be used, and this symbol is called coefficient of viscosity. So you should know what is viscosity. So I am going to explain. Sir, when a liquid is flowing through a pipe, this red line is a pipe, okay? And layers of these are layers of
fluid, and I'm changing color. Why I'm changing color? I'm going to explain. I'm going to explain. This first line is a pipe, and this is first layer, this is second layer, this is third layer, this is fourth layer, this is fifth layer. Okay, and consider water is flowing or liquid is flowing in this direction. If I ask you what is friction, what is resistance between pipe and layer number one, you know pipe is stationary. Pipe is stationary and layer number one is moving. So the resistance or friction between pipe and layer number one will be maximum. But if I ask you, sir, what is the resistance or opposition between layer number 4 and 5? Sir, 4 is moving, 5 is moving. Both are moving. If they are moving in the same direction, then the resistance between layer number 4 and layer number 5 will be very minimum. So the between resistance between adjacent layers in laminar flow, it is called viscosity. Viscosity is the resistance between adjacent layers in laminar flow. It is called viscosity. Okay, so viscosity is resistance between two layers. But sir, what is resistance between pipe? You know pipe is a solid, and layer number one. So this is not called viscosity. It is called drag. It is called drag. Drag is a force which is between solid material and fluid. Okay. Drag is the resistive force between a solid material and a fluid. It is called drag. And the resistance between two layers, between two adjacent layers, it is called viscosity. So I have given you this concept, but when we will be solving question, inshallah, it will be explained more. So in simplicity, you can understand, sir, viscosity, it is a resistive force. Drag is a resistive force. But what is the difference? So difference is viscosity is the resistance between two layers of fluid, and drag is the resistance between pipe and fluid, solid and fluid. It is called drag. ठीक है जी. मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, बात समझ में भी आ रही है, ये सो रहे हैं. अब बेटा मनाइल, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स. सर, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस between two adjacent layers of fluid, and drag is the resistance between a solid body and layer of fluid. Manahil, what is the difference between viscosity and drag force? ये तो आप पढ़ के बता रही हैं, जो मैंने सुनाया है वो बताए ना. जब दो लेयर्स लिक्विड की फ्लो कर रही होंगी, जब दो लेयर नहीं, मैंने इतनी सारी लेयर्स बनाई हैं. ये जो मैंने इतनी सारी लेयर्स बनाई हैं, तो लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बिटवीन जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. विस्कोसिटी रेजिस्टेंस होती है बिटवीन लेयर्स. विस्कोसिटी रेजिस्टेंस होती है बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड. लेयर्स ऑफ फ्लूइड. मनाहिल, क्या होती है विस्कोसिटी? जी, ठीक है जी. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको बेटा आगे बढ़ा लेता हूँ. आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टोक्स लॉ. सर, स्टोक्स लॉ क्या चीज़ है? तो जरा स्टोक्स लॉ सुनिएगा. सर, स्टोक्स लॉ ये है कि कंसीडर दिस इज अ कंटेनर in which a liquid is filled. ठीक है, in which liquid is filled. And now, and remember, there are layers of fluid. Okay, there are layers of fluid.
there are layer of fluids, and now I am dropping a solid sphere between the layers of fluid. When when this solid sphere falling down, then these layer, this layer and this layer, will offer friction to the fall of sphere. Sphere is falling, sphere is falling, but there is a friction between surface of sphere and layer of fluid. And this friction is called drag force, and according to Stokes' law, the is equal to drag force is equal to 6 pi eta VR. 6 pi eta VR. And I should write a proper sentence. बेटा लिखिएगा, when a solid object, it may be a solid sphere, it may be a solid object, when a solid sphere moves through a fluid, consider we are dealing a liquid, consider, but it is valid for all fluid. So when a solid sphere moves through a fluid, it experiences a drag force. It experiences a drag force is given by, and this equation is called Stokes' law. This equation is called Stokes' law. I'm going to explain this equation as well, but write only this sentence, और ये sentence मुझे उसवा समझाएंगी. उसवा बेटा गौर से सुनिएगा. उसवा, when a solid sphere is moving through a liquid, then obviously liquid offering a drag force, liquid offering a resistive force, and the friction of liquid, the resistive force or the drag force is 6 pi eta VR, and this equation is called Stokes law. जी बेटा उसवा, स्टोक्स लॉ क्या बोल रहा है? Eta VR. Okay, okay. And in this equation I am going to explain. देखिए बेटा, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के साथ, स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये तो टॉपिक हमने आईजीसीएसई में भी बेटा पढ़ा हुआ होता है. व्हेन वी स्टडी टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक, then you know, when the object or skydiver jumps, when his speed is zero, there is no air resistance. When he is falling down, then speed is increasing. When speed is increasing, then drag force is increasing. Drag force is equal to air resistance. When object moving through air, then it is called air resistance. When an object is moving through liquid, then it is called Stokes law. तो स्टोक्स लॉ में भी ड्रैग फोर्स की बेटा बात हो रही है. जितनी तेज स्पीड से मूव करोगे, जितनी हाई स्पीड होगी सर, फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी. ठीक है जनाब. तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्पीड. ठीक है जनाब. हाई स्पीड, ड्रैग फोर्स विल बी हाई. नंबर टू, सर ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द साइज. ऑन द साइज, ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा होगा तो उस पर ड्रैग कम लगेगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा. कम सरफेस एरिया कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है. जितना बड़ा साइज होता है सर, उतनी ज्यादा वो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो दिस आर रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है जनाब. आर रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड इफ वी आर डीलिंग with sphere, then you know the size of sphere is measured by its radius. And sir, what is this?
We read this symbol as eta, and this is called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity means how thick, how thick or stick is the liquid. लिक्विड कितना ज्यादा स्टिकी है, लिक्विड कितना ज्यादा स्टिकी है, द स्टिकनेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्या मतलब? अगर आपके पास पानी हो और आपके पास हनी हो, ठीक है जनाब, तो किस में स्टिकनेस ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली हनी में स्टिकनेस ज्यादा होती है, हनी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होती है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वाटर की स्टिकनेस कम होती है, वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कम होती है। तो स्टिकनेस ऑफ लिक्विड इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हनी की स्टिकनेस ज्यादा होगी, पानी की स्टिकनेस कम होगी। तो स्टिकनेस shows in easy wording how dense is the liquid. How dense is the liquid? If the liquid is dense, then its viscosity is high. The density of honey is much higher than density of water. So the viscosity represents how thick is the liquid, thickness of liquid, thickness or stickiness of liquid. It is called coefficient of viscosity. So viscosity of honey is very high, and remember viscosity decreases with temperature. Viscosity decreases with temperature. Coefficient of viscosity decreases with temperature. अगर आपके पास घी हो, आप घी को गर्म करें तो वो मेल्ट होकर ऑयल बन जाएगा। जब ऑयल बन जाएगा तो उसकी स्टिकनेस कम हो गई, और ऑयल को भी बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करें तो वो और थिन हो जाता है, उसकी स्टिकनेस और कम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कम हो जाती है। बट जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, इतने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए कि जब कोई स्फेयर किसी लिक्विड में गिरता है, या जब कोई स्फेयर मूव करता है, जब कोई स्फेयर मूव करता है किसी फ्लूइड में, तो उस पर लगती है ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स का बेटा ये फॉर्मूला होता है। तो यू शुड नो ओनली दिस फॉर्मूला। आपको सिर्फ फॉर्मूला आना जरूरी है, इसके अंदर वो पूछेगा भी नहीं ये कहाँ से क्या है। ओनली यू शुड नोट डाउन द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज 6 पाई ईटा वी आर। ठीक है ना? तो अगर आपने बेटा ये सारी थ्योरी जो मैंने आज सुनाई है समझ ली है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये थ्योरी इंशाल्लाह और अच्छी समझ में आती चली जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको ये थ्योरी और अच्छी समझ में आती चली जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर 2022। ठीक है जी। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन होंगे, एंड नाउ वी कैन सॉल्व ऑल पास पेपर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज अ चाइल्ड is holding a toy balloon which is attached by a string. Okay, and you know it is filled with helium, and helium is less dense than air. That is why such a balloon always moves upward. The question is, the child the child releases the balloon by letting go of the string. ठीक है जनाब, बच्चे ने स्ट्रिंग छोड़ देना है अभी। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, calculate resultant force. So I am asking you, Zainab beta, Zainab, can you tell me how many forces are acting on the balloon? And you know this helium balloon always moves upward. आपने देखा हीलियम बलून बच्चे खेल रहे होते हैं ऊपर भागता है। हाँ तो बेटा मुझे बताइए, हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बलून? नंबर वन, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, यू आर राइट सर, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, okay, it is right, this is weight. And upthrust exerted by air, it is acting upward.
And if the child is holding the balloon, then beta Zainab, there is a third force is also acting on the balloon. बता सकती हैं? और एक और थर्ड फोर्स भी है जिसने इसको रोक के रखा हुआ है. ग्रेविटी तो बेटा वेट में आ गया ना. नहीं, फ्रिक्शन जब लगती है जब जब बॉडी मूव करती है. विदाउट मूवमेंट नो फ्रिक्शन. नहीं. This is a string by which the balloon is in control. So which force is acting in the string? Yes, tension force also acting in the string. Okay, but we are going to calculate resultant force as the child release the balloon. And the release the balloon means he is not holding the string, he is releasing the string. And when he releases the string, then obviously balloon moves upward without tension in the string. So I am not writing the tension in the string, and I'm solving this question only by these two forces. And in these two forces, upthrust is responsible for the upward motion. Upthrust is responsible for the upward motion. So if I ask what is the resultant force, you know resultant force and net force. Sir, if the two forces are acting in opposite direction, then we subtract them. Sir, upthrust acting upward, upthrust acting upward minus weight acting downward. Okay, but these two forces are acting on the balloon, upthrust acting upward when the balloon is released. So upthrust is greater than weight. Okay, and now I am asking you, बनीन बेटा आप इतनी देर से खामोश बैठी हैं. बनीन क्या आप हमें बता सकती हैं what is the formula to calculate upthrust? G. It is rho G volume, and this rho is the density of air. Okay, in this question, air is acting as a fluid. Density of air and the volume of balloon, okay, minus weight, and weight is mg. Weight is mg. And the issue is, no, there is no issue, all the values are given. Okay, so the density of air is 1.2. I am putting the values now. Density of air is 1.2, gravity is 9.8, the volume of balloon is 5 exponent minus 2. This is upthrust. This is upthrust calculation. Okay, and now I am subtracting weight. Sir, for weight, the mass of the balloon is 9.2 exponent minus 3. 9.2 exponent minus 3, it is mass, and mass into gravity, gravity is 9.8. Okay, so I have used the equation of upthrust. It is rho GV minus weight, weight is mg. So if you use scientific calculator, then you can calculate resultant force. So either you use scientific calculator, because बता सकते हैं बेटा कोई बच्चा आंसर में? आंसर इज 0.498. 0.498. 0.498. जी बेटा, हैव यू नोटेड 0.498? Upthrust acting upward, weight acting downward. We have to calculate the resultant force and the resultant force only just after it is released. And you know, if we calculate this resultant force after 5 or 10 seconds, but a Zenab,
जब हमने बलून को रिलीज किया वी हैव कैलकुलेटेड रिजल्टेंट फोर्स राइट नाउ। हाँ बेटा, अगर मैं 10 सेकंड के बाद मैं बोलूं कि नाउ कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, तो वन मोर फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द बलून। कैन यू टेल मी विच वन मोर फोर्स विल बी इन एक्शन? No, 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 no. Okay, okay, I'm going to explain because that force we are going to use in the next part of the question. Okay, and now you read the question. Immediately after the balloon is released, it begins to move upward. And this is, you can see, but a indicative question. हाँ बेटा जैनब, आप जानती हो इंडिकेटिव क्वेश्चन का मतलब? इंडिकेटिव का मतलब देयर इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ठीक है जनाब। और डिस्क्रिप्शन आपको पता है ज्यादा दिमाग खराब करती है। कैलकुलेशन में तो फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकाल लिया। बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू राइट indicative question. The question is the density of the air is constant, there is no wind. Explain how the forces acting on the balloon affect its motion as it moves upward. Now it is moving upward. Now it is moving upward. Now the balloon is moving upward. When the balloon is moving upward, then what will happen? I am going to explain. Sir, this is a balloon. When it was not released, weight acting downward, yes. Tension of the string acting downward, yes. Upthrust acting upward, yes. This is upthrust, this is tension, this is weight. These three forces are acting when the balloon is in the hand of the child by a string. These three forces acting. But as you released the balloon, it means tension will be zero. Tension will be zero. Balloon is released, no tension. And now it is moving upward. And when it is moving upward, then which force is greater? So the answer is upthrust. I am writing answer, okay, beta? Upthrust is greater than weight. Upthrust is greater than weight. So it begins to move upward. Okay, but as balloon is released, then obviously upthrust is greater. So upthrust is greater, weight is lesser, so it is moving upward. Okay, but when it moves upward, बेटा जैनब मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब ये ऊपर भागने लगेगा तो एक और नई फोर्स इस पर एक्ट करने लगेगी। पता है कौन सी फोर्स? सर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, then against the movement drag force is produced. Drag force is produced. When balloon was not moving, no drag force, no air resistance. But when balloon moves upward, then drag come into the action. So now I am writing. Now drag force also acting on the balloon. Initially, no drag force, but when the balloon is moving upward, sir, when the balloon is moving upward, then drag force come into the action. And now drag force also acting on the balloon and it is moving downward. Balloon moving upward, so drag force acting downward. So I can write the equation in this way. Net force equal to weight acting downward but upthrust acting upward, weight acting downward, and drag force acting downward. Drag force acting downward.
ठीक है जनाब। अब जरा एक नई बात सुनना बेटा, एक नई बात सुनना। वेट इज कांस्टेंट, अपथ्रस्ट इज कांस्टेंट, upthrust remains constant, weight remains constant, but as the balloon is moving up, its speed is increasing. And you know, when speed is increasing, then drag force begins to increase. सर आपको किसने बताया ड्रैग फोर्स स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है? बेटा मुझे बताया स्टोक ने, मुझे बताया स्टोक ने। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, drag force is directly proportional with the speed of the object. 6 pi eta radius are constant. Drag force directly proportional with the speed. As the speed of the balloon is increasing, it is moving upward. Its speed is increasing, then drag force is increasing. So now I am writing the next sentence. I am writing the next sentence. As speed is increasing, as speed is increasing, drag increase. अच्छा बेटा जरा नोट करना। सर upthrust is constant, weight is constant. If this number is increasing, which is in the form of minus, okay, when this number is increasing, तो बेटा मनाहिल आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट अबाउट नेट फोर्स? नेट फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बेटा? नेट फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी व्हेन ड्रैग इज इंक्रीजिंग? यस यू आर राइट, नेट फोर्स विल डिक्रीज. And if net force is decreasing, then you know net force contain acceleration, ma. Okay, so net force is decreasing, so acceleration is decreasing. So I am writing thus net force and acceleration is decreasing. As balloon moving upward, its speed is increasing. As balloon is moving upward, speed is increasing. When speed increase, sir, drag force increase. When drag force increase, then net force decrease. And net force decrease means acceleration decreasing. Net force decreasing means acceleration decreasing. And now I am writing final sentence. Final sentence. This drag force keep on increasing. This drag force keep on increasing. The net force keep on decreasing. And after a certain time, then net force becomes zero. Then net force becomes zero. So net force is decreasing. So this net force eventually zero. And when net force is zero, when net force is zero, I am writing it is the final sentence. When net force is zero, as net force is decreasing. So net force is decreasing. So if net force is decreasing, then obviously net force eventually becomes zero. And when it is become zero, the velocity of balloon, the velocity of balloon will be maximum and constant. ठीक है बेटा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग बढ़ता जा रहा है, बलून ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग बढ़ रहा है, ड्रैग बढ़ते 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 ड्रैग इतना हो गया, इतना हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. एंड डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेलोसिटी? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. इस वेलोसिटी का नाम क्या है? सर इस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी.
तो बेटा जो बातें मैंने बोली जरा मार्किंग स्कीम में देखे उसने क्या लिखा है। बेटा मार्किंग स्कीम में देखे उसने क्या लिखा है, जरा देखना बेटा। कहते हैं जनाब अपथ्रस्ट ज्यादा है, सुनना बेटा, अपथ्रस्ट ज्यादा है तो अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा है। अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से, ठीक है। और शुरू में देयर इज नो ड्रैग फोर्स, देयर इज नो ड्रैग फोर्स। बलून एक्सेलरेट होता है, बलून की स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग बढ़ने लगता है, ड्रैग बढ़ने लगता है। ड्रैग बढ़ेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कम होने लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होने लगेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट पकड़ चुका होगा टर्मिनल वेलोसिटी। और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ चुका होगा तो आप समझ जाइए कि थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो जब ड्रैग और वेट अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए, जब अपथ्रस्ट ड्रैग और वेट के सम के बराबर हो जाए तो ऑब्वियसली देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट और बलून हैज एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा ये मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक भी पढ़ा दिया और टर्मिनल वेलोसिटी के साथ साथ आपने 2022 के अक्टूबर का बेटा पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आज की क्लास में बेटा वी हैव कंप्लीटेड theory of this chapter as well as we have practiced one question on this topic. Inshallah, tomorrow at the same time we will do more practice on this topic. कल हम और आपको पास पेपर के क्वेश्चन कराएंगे और तमाम क्वेश्चन में जो आज मैंने थ्योरी पढ़ाई है द सेम थ्योरी वी विल बी यूजिंग, द सेम थ्योरी वी विल बी यूजिंग. So right now I am stopping my recording and it is 27th October 2025 and it is our first class on material. Allah Hafiz.